Good morning, students. In the last class, we had started the first freedom struggle of India, that is of 1857. Today, we will continue that chapter. As you know that our history's chapter are too long, so it's not possible to complete it in one video. One more important thing I wanted to tell you, you have to read the lesson thoroughly. From starting to end, be careful, don't miss any topic. Just carefully read it once and then go for the video. Only watching video can't help you. Remember this thing. And while reading or while watching the videos, do one thing, keep open your books, take one pencil or highlighter in your hands, and wherever you think that some important dates are there, some important events are there, some important name any freedom fighters or someone established, जहाँ भी हमें लगता है कि ये चीज़ कुछ महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, you have to underline, you have to highlight that portion. क्या होगा इससे? जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बुक खोलते ही आपको सामने जितने भी पॉइंट्स हाईलाइटेड दिखेंगे, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट एंड हैव टू लर्न. It will help you in studies. So in this way you have to go through. Clear? At that day we had seen that our first freedom struggle was not an instant event. बहुत लंबे समय से लोगों के मन में असंतोष था. वही असंतोष अचानक से एक चिंगारी पाकर भड़क उठा था. As we know, from all the corners of the country, people participated in that, even in the tribals of the remote areas. They also took part. और ये सारी चीज़ें थी जिसने इस स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया. हमने उस दिन देखा था there were political reason, economic reason and social reason. In that political reason, one main reason was the doctrine of lapse policy of Dalhousie, Lord Dalhousie. उनकी ये पॉलिसी ये थी कि जहाँ कहीं भी, as you know, हमारा देश राजाओं का देश होता था. वहाँ एक परंपरा हुआ करती थी कि if the king is not having his real heir, अगर उनका उत्तराधिकारी उनका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो अपने ही परिवार के किसी दूसरे बच्चे को गोद लेते थे, उसे सिंहासन पर बिठाते थे और शासन को कंटिन्यू किया जाता था. बट लॉर्ड डलहौजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस अडैप्टेशन एंड उन्होंने ये कानून बना दिया कि जिन राजाओं के रियल हेयर नहीं हैं, उत्तराधिकारी नहीं हैं, उनके राज्य कैन बी डिसॉल्व्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. उनका शासन ब्रिटिश सरकार अपने अधीन उनका राज्य कर लेगी. दिस वॉज हिज पॉलिसी. और इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने नागपुर, ग्वालियर, झांसी ऐसे बहुत सारी रियासतों को they took control of it. यहाँ पर यह हुआ कि जिन राजाओं को उनके राज्य से बेदखल कर दिया गया था, they were also angry with the British policies, and in this way they took part in this struggle. After that, economic policies, at that day we had seen that economics policy में बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लेवीड फ्रॉम द फार्मर्स. लैंड पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए. अनदर पॉइंट इज एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड. सो वहाँ से more and more manufactured goods
जो मशीनों से बनाए हुए सामान थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में बेचना चाहती थी, एंड दैट्स व्हाई they destroy our handloom and handicraft portion. A total economy was destroyed. In social reason, Lord Macaulay started English education in India, but he started English education only to benefit themselves. They wanted some educated person to run British administration, and that's why they wanted to be manufactured a team of clerks only. And here racism also took place. A lot of discrimination that is भेदभाव. हमारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था. लोगों में एक भावना आ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट wanted to destroy our social and religious structure. One more important thing is here, British government had made some rules to eradicate the bad custom prevailed in our social structure. कुछ कुप्रथाएं भी थी देश में, उन्हें हटाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए, बट पीपल थॉट दैट दिस इज द इंटरप्शन इन आवर सोशल एंड रिलीजियस लाइफ. सो दीज आर द मेन कॉजेस. आफ्टर दैट we'll see one more thing. People thought that British government wanted to spread Christianity. They wanted to convert more and more people into Christian religion, and this was an attack on our own religion. So these are the causes of 1857 struggle. Now another main point is discontent among soldiers. As we know that British government kept a big army, but in that army the soldiers were Indians, and there was a lot of discrimination. The officer's post was given only to the European people. Indian soldiers just had to reach up to a post of Subedar only, and they get less remuneration, less salaries, less facilities, everything, whereas the counterparts, the British, the European officers will get more privileges. This thing make an discontent among the soldier. The soldiers were dissatisfied with this policy of Britishers. Whereas when they saw that the people of India, their brothers, they were a part of Indian culture, they were a part of our society, when they saw कि हमारे ही भाई बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, they also ready to join this struggle. So first time it happens that even the force, even the soldiers took part in this. Now, immediate reason. See, on page number 130 in your book, there is a paragraph of immediate reason. What happened there? On 29th March 1857, a soldier named Mangal Pandey, he refused to use the loaded cartridge and shot a British officer in a fit of anger. Mangal Pandey was arrested and executed, फांसी दे दी गई, on 8th April 1857. Now Mangal Pandey was the first one to sacrifice his life in the revolt. Now what is this loaded cartridges? See, at the same time, British government introduced a rifle named Enfield.
This rifle was given to the soldiers, in which they have to use cartridges, कारतूस, जिन्हें उन बंदूक में लोड करके चलाना होता था. Now these cartridges containing cow and pig's lard. लोगों को पता चला कि ये जो कारतूस हैं ये गाय और सूअर के मांस से बने हुए हैं. And the main point was that these cartridges should be opened with teeth. उन्हें इन cartridges को अपने दांतों से खोलना होता था before loading in the rifle. राइफल में लोड करने से पहले उस कारतूस को दांतों से खोलकर फिर लोड किया जाता था. Now here the main point is cow. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ और पवित्र मानी जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी. हम गाय का मांस कभी नहीं खाते. द सेम विद द मुस्लिम्स, they don't use pig's lard. So here this thing hurt the religious sentiments of the soldiers. लोगों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत होने लगी. उन्हें यह महसूस होने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर आघात करना चाहती है. And in this way they refused to use these larded cartridges. So the first incident was the incident of Barakpur, West Bengal, that is the incident of Mangal Pandey, who refused to use larded cartridges on 29th March 1857, and in fit of anger he shot an officer dead. He was arrested and executed. So Mangal Pandey was the first martyrdom. वो पहला बलिदानी था जिसने 1857 हमारी आज़ादी की लड़ाई में अपना पहला बलिदान दिया था. After this what happens? This Barakpur incident was repeated in the Meerut. Meerut also an cantonment zone. It is a military chowni was there, and the soldiers from that Meerut cantonment, they also refused to use these larded cartridges, and 85 soldiers revolted there. They refused. At the result, they were dismissed from the army and arrested and imprisoned. Imprisoned, जिन्हें जेल में डाल दिया गया. This was happened on 9th May 1857. As a reaction to their dismissal, what happened? The other soldiers on the very next day, 10th March 1857, what they did, openly confronted the government by breaking into the prison and liberating the arrested soldiers. उन्होंने, उनके साथियों ने, ये जो 85 सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया था, उस घटना के खिलाफ उनके साथियों ने अगले ही दिन जेल पर धावा बोलकर, जेल तोड़कर उन सारे साथियों को रिहा करवा लिया. एंड आफ्टर दैट दे अटैक द आर्टिलरी. वहाँ पर जितने भी हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, they looted it and marched towards Delhi. This was the major incident, and that's why this date is known as the starting of 1857 struggle. Now see the paragraph that is given in the block letter. The incident causing revolt happened in Barakpur, but the revolt is actually considered to have begun on 10th of May because the revolutionaries came forward in an organized and planned way to challenge the British rule following the Barakpur
incident. Now, when this news spread all over India, people started supporting our soldiers at very different place. Sudden revolt was started. This spread like a fire. See here, Awadh, Kanpur, Ruhelkhand, Aligarh, Mathura, Agra, Badaयूं, many parts of Bihar, even in the Madhya Pradesh also, they started, greeted people every place. They wanted to support the people. सभी ने उनका साथ दिया, and in this way the farmers, artisans, zamindars, everybody helped. And this became a large revolt. Now, what they did? People started looting the government offices, the loan papers, account books, everything was seized. British courts, revenue offices and police stations were attacked by the common people. This revolt took the proportion of a nationwide event because of the participation of common people. So, from different area of the country, from Bihar, from Uttar Pradesh, from Madhya Pradesh, Gwalior, Kanwar Singh, Tatya Tope, and so many freedom fighters, Azimullah Khan, even Rani Lakshmibai from Jhansi, the male, female, everyone took part in that. The soldiers of different regiments, that is Sikh regiment from Ludhiana, even the Lucknow's Begum Hazrat Mahal, she was also took part in this event because she wanted to rule her province on the name of his son. But because of the Dalhousie's policy, doctrine of lapse, they took control of their province. That's why she also rebelled. Now, in this incident, entire revolt, Hindus, Muslims, they fought together. British attempt to instigate a rift between them, बहुत कोशिशें की हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालकर, जहाँ पर मुस्लिम लीडर्स लीड कर रहे थे तो उन्हें कुछ बहकाकर बहुत सारी मनों में, सबके दिलों में एक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, बट दे डिडंट सक्सीड. लोग बहुत ज़्यादा अवेयर थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स की इस बात पर ध्यान नहीं दिया. In this way, this revolt shook the British Empire. Though it was not succeeded, many people, 3 lakh people died in this event, in this revolt. But we didn't succeed it, क्योंकि कुछ कमियां भी थी और इसी वजह से हम इसमें सफल नहीं हो सके थे. Now, see, after this we will see the reasons of failure of this struggle. कुछ कारण होते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर स्टार्ट होने के बावजूद हमारा यह संग्राम सफल क्यों नहीं हुआ. बहुत सारे रीजंस हैं इसमें. द फर्स्ट वन वाज लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए द यूनिटी इज मस्ट. वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी मस्ट बी अप्लाइड, बट हियर दिस वाज लेकिंग. कमी थी इस चीज़ की. ऑर्गेनाइजेशन, this was not started in a planned or concrete manner. This was the main problem. अचानक से विद्रोह हुआ, लोगों के मन में असंतोष ज़रूर था, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत हम काम नहीं कर पाए
और इसीलिए ब्रिटिशर्स गॉट द चांस टू सप्रेस, उन्हें हमें दबाने का मौका मिल गया। नाउ लैक ऑफ लीडरशिप, किसी भी कार्य को करने के लिए वन टैलेंटेड लीडर मस्ट बी देयर हु कैन गाइड द पीपल, बट यहाँ पर इस चीज़ की कमी दिखाई दी और इसी वजह से ये हमारा संग्राम सफल नहीं हो सका। ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, सी ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स, how it used? At that time, Indian soldiers were used only old weapons, bhala, barchi, tir kaman, all that. Whereas the British soldiers, they were having modern weapons with them. और ये एक बहुत बड़ी कमी थी हमारी। Feudal features, फ्यूडल फीचर्स में ये है, एट दैट टाइम ज़मींदारी सामंत प्रथा हुआ करती थी। कुछ राजा रजवाड़े जो उनसे असंतुष्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उन्होंने खुल के विरोध किया, बट सम ऑफ देम दे वर इन फेवर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तो हम लोगों में आपस में ही फूट रही, आधे लोग फेवर कर रहे हैं, आधे लोग अपोज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण रहा हमारा असफल होने का। नाउ अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड, सी व्हेन द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ लेट टू द दिल्ली, दे सडनली अनाउंस्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, हु वाज अननोन अबाउट दिस इंसिडेंट। और इसी वजह से वो अचानक से कुछ डिसीजन नहीं ले पाए, वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम, और लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें अरेस्ट कर लिया एंड ही वाज सेंट टू रंगून। प्रीमैच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सी 1857 स्ट्रगल, इफ इसे कुछ दिन और बहुत अच्छे से प्लान किया जाता एंड देन इफ इट स्टार्टेड, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर वेरी श्योर कि ये रिवोल्ट हमारा सक्सेस हो जाता। ये प्रीमैच्योरली पूर्व में ही शुरू कर दिया गया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट इज संचार की सुविधाएं। नाउ एट दैट टाइम देयर वाज नो मीन ऑफ कम्युनिकेशन देयर। इफ रिवोल्ट टुक प्लेस इन वन पार्ट ऑफ कंट्री, द अनदर पार्ट डोंट नो अबाउट दैट। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद अगर वहाँ पर खबर मिलती है एंड पीपल स्टार्टेड रिवोल्ट देयर ऑल्सो, देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट द टाइम टू कंट्रोल, एंड दिस वाज द मेन रीजन। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द अनदर मेन प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। सी इंडिया इज हैविंग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, isn't it? In our every part a different language was speaking. Nowadays we are aware of that and many of people are understanding this, but at that time this was the main problem. People can't understand the language, so it is very difficult to communicate their message to other soldiers or other part of the country, whereas the Britishers are communicating only in one language, that is English. So for them it is very easy to understand each other. So these are the reasons of failure of 1857 struggle. Now in this struggle, many freedom fighters from different areas, they took part, they lead this struggle. So in next class we can study about these freedom fighters. Okay, rest is in the next class. Thank you.